Good morning, students. Today we'll discuss about our next topic, that is IPR 1956 Industrial Policy Resolution. During the plan periods of 1950 to 1990, the government has passed a resolution for the industrial development. What does this resolution state about the industrial development? Let's see. Actually, this provision or these provisions were adopted as a roadmap of the control of the government on industrial growth. That means the government actually do want to control the development of industries in the country. Means the public sector was given as a primary or a dominant role in the economy for the development of industries. So here are the elements of IPR, Industrial Policy Resolution. The first element is threefold classification of industries. Mainly, the government has divided the industrial development into three parts, or the industries were classified on the basis of their ownership into three parts. The first is public sector enterprises. Those enterprises which are owned and governed by the government, mainly atomic energy, defense, and railways, were owned and governed by the government. These industries were termed as public sector enterprises. That means the government has a direct control, or government has a direct administrative power within its hands to control these industries, and these industries were known as public sector enterprises. Okay, मीन्स गवर्नमेंट का जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल था या जिनको कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही थी, जिनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट संभाल रही थी, उनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का नाम दिया गया. मेनली जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की इंडस्ट्रीज थी उनके गवर्नमेंट का कंट्रोल रखा गया. The next classification is public private partnership, that is triple P. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, public private partnership, that means both public and private sector combinedly owns and govern the industries. But an important point here is to note that the government has the main role to play and the private sector industries were given a secondary role. Fertilizers and mining industries were established under public private partnership. The next classification is private sector enterprises. Apart from the above mentioned industries, all the rest industries were given to private sector. मीन्स बाकी जितनी भी बची हुई इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे या उन एरियाज़ में जो है प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है. जितनी भी बाकी बची हुई जो एरियाज़ हैं अपार्ट फ्रॉम दीज फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन्स जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उनको छोड़ के जो इंडिविजुअल रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का वो बाकी एरियाज़ में होगा. सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप. The next point is industrial licensing. Industrial licensing was the policy which was adopted by the government to control the private sector industries. That means government do want to promote the regional equality in the economy regarding industrialization. Means government wanted that private industries or private sector industries should establish or set up their units in backward regions or mainly rural regions, so that regional development or regional equality can be achieved. So you can see to promote the regional equality, the government adopted this policy for private sector. Okay, so this policy was adopted by for private sector only. That means the private entrepreneurs had to take license before commencing or to set up their industries. The other point we can highlight, industry licenses were issued easily for the enterprises which were establishing their units in backward regions. Okay, वो इंडस्ट्रीज जो बैकवर्ड रीजन्स में अपनी यूनिट्स एस्टैब्लिश करना चाहती है, मेनली रूरल एरियाज में, उन इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसेस जो है गवर्नमेंट इजीली इशू कर देती थी comparatively those industries which were establishing its unit in urban areas or market areas. Okay, the next element of IPR is industrial shops, or you can say industrial concessions. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, industrial concessions, that means industries were offered various concessions by the government. Again, this point was to lure the private sector to establish its industries in backward or rural areas. मीन्स गवर्नमेंट जो है लुभा रही थी इंडस्ट्रीज को, ल्योर कर रही थी इन कंसेशंस के थ्रू,
ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है रूरल एरियाज या बैकवर्ड एरियाज में एस्टेब्लिश कर सकें. सो दिस पॉइंट और दिस प्रोविजन वाज आल्सो टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. And what type of concessions the government was offering? These concessions are, say, tax holiday. Tax holiday. Holiday means छुट्टी. मतलब tax से छुट्टी. मतलब the industries were left free to pay tax. That means they had given exemption from the tax. That means उनको tax में छूट दी गई थी. They had not to pay any tax for a specific time period. वो 5 साल भी हो सकता था, वो 10 साल भी हो सकता था. Okay. जैसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 10 ईयर्स का जो टैक्स हॉलीडे प्रोविजन है वो रखा गया. दैट मीन्स फर्स्ट 5 ईयर्स जो है उनको जीरो टैक्स पे करना पड़ता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स ओनली 50% टैक्स पे करना पड़ता है. इसी तरीके से टैक्स हॉलीडे प्रोविजन जो है IPR में भी इंट्रोड्यूस किए गए थे. द नेक्स्ट वन इज सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई. जो पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है इंडस्ट्रीज में, उनके जो चार्जेस थे उनके ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी. बॉन्डेड वेयर हाउसेस, गवर्नमेंट जो है उनको वेयर हाउसेस प्रोवाइड कर रही थी इंडस्ट्रीज को, सो दैट दे कैन स्टोर देयर रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स इजीली. The next topic is SSIs, or the development of small scale industries. Okay, and small scale industries were developed mainly to promote the growth with employment and equity. Government want to develop the economy, or government want the growth with employment and equity. That's why small scale industries were promoted. Here are 2 points. Large scale industries were established to generate infrastructure. Mainly large scale industries were given the role to provide a base or a foundation for infrastructural facilities in the economy. Infrastructure means like roads and dams and bridges and power supply hai. These were mainly the infrastructure which were required for the growth process. So large scale industries were given the role to provide the basis of infrastructure, whereas small scale industries were established with a view to generate employment, or you can say the social equality. Small scale industries, mainly those industries were termed as small scale industries whose investment limit is rupees 5 crores. That means the maximum capital size is rupees 5 crore. So those industries which have a capital size of 5 crores are termed as small scale industries, or SSIs. The role of SSI is in growth process were defined by the Carvey Committee in 1955. A committee was established in 1955 under the chairmanship of Carvey. That's why it is named as Carvey Committee. कार्वे कमेटी ने जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रोल डिफाइन किए थे. वहाँ पे फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कौन से रोल प्ले करने हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में. Here are some features of the small scale industries. So let's begin. The first characteristic of small scale industries is labor intensive. These industries were highly labor intensive. Reason? Because these industries lack the capital base. As we know that only the maximum capital size is rupees 5 crores. Okay, so capital size is very limited. That's why these industries cannot opt for or cannot adopt capital intensive techniques. They used to adopt labor intensive technique, or they uses more and more laborers to produce goods. That's why these industries promote employment. Okay. Secondly, our economy has surplus labor force. एक बेनिफिट इनको ये भी मिला कि हमारी इकोनॉमी में जो है लेबर फोर्स काफ़ी सरप्लस है. जैसे कि हम पहले पढ़े हैं कि प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मींस ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो उन सरप्लस वर्क फोर्स को शिफ्ट करके इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इंगेज किया जा सकता था. दैट्स वाई दीज इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज अडॉप्ट labor intensive technique of production. The next point of features is the equity oriented. Here the equity oriented term is related with geographical locations. That means locational flexibility is offered by small scale industries. What is locational flexibility? Locational flexibility term here means mainly large scale industries establish their units nearby the areas where raw material is easily available to them, because large scale industries need raw material in huge quantity. That's why they do not want to bother with the transportation cost also along with the cost of raw material. That's why large scale industries establish their units nearby the areas where raw material is easily available. But small scale industries, on the other hand, require or need less raw material. As a result, they can be established in backward areas where industrial development has not begun.
Okay, so this is locational flexibility, means large scale industries mainly market areas के आसपास और रॉ मटेरियल जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे एस्टेब्लिश होती हैं, बट जो दूसरे एरियाज है जहाँ पे आसपास मार्केट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं है, वो एरियाज जो है अनटच्ड रह जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से अनटच्ड रह जाते हैं, वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं होती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मीन्स ये उन लोकेशंस पे एस्टेब्लिश की जा सकती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है या फिर मार्केट एरियाज इजीली एक्सेसिबल नहीं है, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा सकती हैं, सो दैट अलोंग विद द urban areas, rural areas can also have the industrial development. That's why small scale industries provided locational flexibility. Raw material कम चाहिए तो they can bear ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो, कम रॉ मटेरियल चाहिए तो कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इनको इजीली दूसरी ऑफ लोकेशंस पे भी सेटअप किया जा सकता है, जिस वजह से रीजनल इक्वालिटी प्रोमोट होगी, मींस उन एरियाज में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। The next point is small investment. It is also concerned with equity, but this is economic equity, or you can say the social equity or equality. That was locational equity or regional equity, you can say. The second point focuses on equity oriented, that is रीजनल इक्विटी और रीजनल इक्वालिटी, मीन्स उन एरियाज में भी एस्टैब्लिश हो सकती है इंडस्ट्रीज जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। बट दिस पॉइंट, थर्ड पॉइंट हाईलाइट्स economic or social equality or equity, because small scale industries need small investments. As a result, those who do not have huge amount or huge capital to start a business can also establish their units or start a business, because small scale industries need less capital or lesser capital comparatively than large scale industries. That's why it does not lead to concentration of economic power in the hands of rich only, means सिर्फ रिच सेक्शंस ही जो है इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते, जो मीडियोकर्स हैं जिनके पास कैपिटल थोड़ा कम है वो भी एंटरप्रेन्योर्स के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। दैट्स वाई जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच का वो कम किया जा सकता है। Here are some good and bad impacts of industrial strategy or growth of industrial strategy from 1950 to 1990। ये जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी, जो ग्रोथ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी प्रिपेयर की गई थी 1950 टू 1990 के ड्यूरेशन में, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। सो मूविंग टुवर्ड्स द गुड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रीज, द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिला वो था कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसको बूस्टअप मिला, एनुअल ग्रोथ रेट थी जो हमारी 6% हो गई थी। द सेकेंड वन इज ड्यू टू सनराइज इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज स्टार्टेड इमर्जिंग। कुछ इंडस्ट्रीज जिनको स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का जो है दर्जा दिया गया, ठीक है, जिनको हम सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते थे, मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज थी वर टर्म्ड एज सनराइज इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज की वजह से, इनके प्रमोशन की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी जो है इमर्ज होने लगी, उभर के आने लगी। द नेक्स्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस भी प्रिपेयर किया गया इकोनॉमी में, मींस हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होने लगी। द नेक्स्ट वन इज अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, employment opportunities were also provided alongside by the small scale industries. Some bad effects are also there. Apart from the benefits, we had to suffer some dark sides, with the dark side also. The first one is dominance of public sector, or you can say the monopoly of public sector proved inefficient. क्योंकि IPR 1956 जो हमने पढ़ा उसमें मेनली जो है पब्लिक सेक्टर को एक प्राइमरी रोल प्ले करने को दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई, एंड पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है। दैट्स वाई दीज इंडस्ट्रीज वर गोइंग इनटू हैवी लॉसेस, बिकॉज गवर्नमेंट overlooked the modernization or the innovation in these industries। गवर्नमेंट ने इनके इनोवेशन या मॉडर्नाइजेशन की कोई तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, तो कोई इनोवेशन नहीं आया, मॉडर्न टेक्निक्स अडॉप्ट नहीं की गई, इस वजह से ये इंडस्ट्रीज जो थी हैवी लॉसेस में जाने लगी। द नेक्स्ट वन इज ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। IPR 1956 में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया।
मीन्स फॉरेन ट्रेड से या जो एमएनसीज हैं या जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए फॉरेन ट्रेड के ऊपर, मेनली इंपोर्ट्स के ऊपर और एमएनसीज के ऊपर, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. बट रिजल्ट क्या हुआ? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज sorry, the protection hampered the domestic industries to achieve international standards. That means the products produced by the domestic industries or domestically produced goods were not capable to face the competition in international markets by the global giants. वो प्रोडक्ट्स जो एमएनसीज प्रोड्यूस कर रही थी उनके साथ हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स compete नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिकॉज इनोवेशन अडॉप्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने. The next point is import substitution policy. The import substitution policy was highly promoted by the government in order to save our foreign exchange reserves, which are known as forex reserves. गवर्नमेंट ने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए, ताकि इंपोर्ट्स रिड्यूस किए जा सके, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट की. इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स डोमेस्टिकली विच आर बीइंग इम्पोर्टेड. जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऑल्टरनेट या उनके सब्सटीट्यूट्स डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस कर लेना, जिससे कि इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी. अगर इंपोर्ट्स कम होंगे तो हमें पेमेंट भी कम करनी पड़ेगी. एज अ रिजल्ट आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैन बी सेव्ड. But due to import substitution policy, forex reserves, instead of means saving foreign exchange reserves, they were started declining. Reason being, government did not focus on export promotion on the other side. गवर्नमेंट ने सिर्फ एक साइड मीन्स लॉप साइडेड फोकस था गवर्नमेंट का, सिंगल साइडेड फोकस था. गवर्नमेंट ने इंपोर्ट तो कट करने की तरफ ध्यान दिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए, जिस वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ सकते थे थ्रू एक्सपोर्ट्स, जो इनकम के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ सकते थे, उनके लिए कोई एफर्ट नहीं किया, सिर्फ बचाने पे, सेव करने पे ही फोकस किया. तो जिस वजह से हम उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, रिसोर्सेज कम थे, तो इंपोर्ट्स उतना ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर पाए. बट एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जा सकता था, लेकिन उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तो एक्सपोर्ट्स बढ़े ही नहीं, प्रमोट ही नहीं हुए. तो हमारी जो इनकम हो रही थी, जो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बढ़ने वाले थे, वो बढ़े ही नहीं. एंड ग्रेजुअली इंपोर्ट्स की वजह से वो डिक्लाइन होते गए. तो एक्सपोर्ट प्रमोशन को इग्नोर करने की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने की बजाय और घटते गए, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स प्रमोशन की तरफ ध्यान नहीं दिया. और रिजल्ट क्या निकला कि हमें ओवर द ईयर्स वर्ल्ड बैंक से बोरो करना पड़ा. The next topic is the features of strategy of industrial growth from 1950 to 1990. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन या फिर स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1950 टू 1990. उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम पहले पूरे चैप्टर को डिस्कस किए, तो हम इजीली कह सकते हैं, वी कैन इजीली recollect these points. For example, we know that public sector enterprises were playing a dominant role in the growth of industries. Means public sector enterprises or industries were given a primary role or primary importance. This is the first feature. Private sector was put at the secondary level. Private sector was restricted by permit license Raj. Means private sector had to take, or private entrepreneurs had to take license for establishing their industries. These were the restrictions which were put on the private sector in order to protect the public sector. गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंपटीशन से बचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा. The next one is focus was on import substitution. गवर्नमेंट फोकस वॉज ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को कम करना चाहती थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया. ओके, तो यहाँ से एक नेगेटिव पॉइंट ये भी निकल के आ सकता है, जो हमने गुड एंड बैड इफेक्ट्स में देखा, कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ ध्यान दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन को इग्नोर कर दिया, जिस वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्रीज हो गए. द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. इट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. कैसे प्रोटेक्शन किया गया? बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स. इंपोर्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए, जिस वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो गए और इंपोर्ट्स की या इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड जो है डोमेस्टिक मार्केट में कम हो गई. एंड द नेक्स्ट वन इज फिक्सिंग इंपोर्ट कोटाज. हेयर इंपोर्ट कोटा मीन्स द लिमिट ऑफ इंपोर्ट्स वर फिक्स्ड. कितना इंपोर्ट किया जाएगा एक पर्टिकुलर ईयर में, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या कमोडिटी का, उसकी लिमिट फिक्स कर दी गई. सपोज 500 टन्स जो है जूट ही
लाइक इंपोर्ट किया जाएगा, तो मैक्सिमम लिमिट थी, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। तो इस वजह से इंपोर्ट्स को कम किया गया है, फिर फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहती थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जानती थी और गवर्नमेंट न्यू इट ऑलरेडी और वेरी वेल द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर नॉट कैपेबल और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर नॉट कैपेबल इनफ टू compete with the MNCs. That's why the government put barriers on foreign trade or MNCs. The next point is large scale industries set up, or large scale industries were mainly set up to promote infrastructural base in the economy. It was already discussed, large scale industries को develop किया गया इस ऑब्जेक्टिव से कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है डेवलपमेंट या ग्रोथ करेगी इकोनॉमी में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंडेशन और फंडामेंटल्स वर मेनली द रोड्स एंड ब्रिजेस, डैम्स, पावर, जो पावर हाउसेज हैं, पावर सप्लाई के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एस्टेब्लिश करना इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में इंक्लूड किया गया। एंड द नेक्स्ट वन इज SSIs वर मेनली एस्टेब्लिश टू promote employment with social justice और equality. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इसलिए एस्टेब्लिश किया गया क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना इकोनॉमी में। ओके